हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर्स। तो ये जो वीडियो है दैट इज आल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सेकेंड सेम के अंदर एग्जाम दे रहे हैं। और उसी तरह ये वीडियो जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है ये कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट देती है। और ये पेपर भी जो है आप इस ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं, यूजीसी नेट मैनेजमेंट, यूजीसी नेट कॉमर्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश भी अवेलेबल है। तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि ग्रुप वन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपर से लिए हैं। डिस्क्राइब्स द वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। डू यू थिंक कैटेगराइजेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल इनटू watertight compartment is possible? What do you understand by values? What are the values important to study organizational behavior? What is organizational behavior? What is its scope? What is the necessity of studying the subject? What is organization behavior? Why it is important to study organization behavior? तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस और इसकी जो अदर डिसिप्लिन के साथ रिलेशन है, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। Organizing is a mechanism of management. Discuss what is personality, what are its determinants. Compare and contrast learning and classical conditioning theory of learning. How does heredity influence personality, environment, and situation? Explain. How is organization culture created and sustained? Describe in detail different theories of personality, highlighting their relevance in understanding an individual's behavior at work. What are the different models of perception? What is the relevance of perception in decision making? How attitude get formed, how they can be changed. What is organization culture? Discuss classical conditioning models of learning. What are the concepts and features of organization behavior? Why manager must have a sound understanding of organization behavior? Discuss psychoanalytic theory of personality and also explain the factor which influence the perception. Define motivation, how different theories of motivation help in understanding human behavior at work. Discuss different theories of leadership and also discuss leadership style. Describe some of the learned characteristics of individual behavior. Do these characteristics change with the change in the environment situation? Which of these traits are formed early in year? How difficult to change them? What do you mean by learning personality? Explain the salient features of learning personality. What is the significance for their management? Motivation cannot be boosted always by increased salaries. What do you understand by this statement? Explain the various motivational theories. How leadership rectify the imperfection of formal organization relationship. State the various techniques of leadership. ग्रुप वन के अंदर से आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, तो वहां से आपको करने हैं 2 क्वेश्चन। ग्रुप टू, वाई ऑर्गेनाइजेशन नीड टू चेंज, वाई पीपल रेजिस्ट चेंज, हाउ सच रेजिस्टेंस कैन बी ओवरकम। तो ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। राइट ए डिटेल नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इंटरवेंशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप डायनामिक्स? व्हाट मोटिवेट यू टू ज्वाइन ए ग्रुप? Change in one part of the organization affect the entire organization. How resistance to change can be managed? Discuss the nature of group dynamic in informal organization, its impact on the effectiveness of the organization as a whole. Why organization need to change? Why people resist change? How such resistance can be overcome? What do you mean by team development? What are the steps in the team development? What are the different types of teams? How resistance to change can be managed? What are its implications? What is conflict? What are its causes and how it can be managed effectively? Explain. What do you mean by stress? Explain the different sources of stress and the remedial measure to remove the stress. Group third, Maslow's theory of need hierarchy.
Stress as a motivator. What do you mean by sustainable culture? What do you mean by emotional moods? What do you mean by organizational diagnose? What do you mean by perceptual map? What do you mean by distress management and organization behavior? Cognitive learning, eustress versus distress, process of planned change, difference between planned and unplanned change, process of group formation, importance of perception, explain autocratic style of leadership, how resistance can be managed. Group cohesion, what is paternalistic leadership? Explain the variable which affect group behavior, theories of planned change, difference between X theory and Y theory, managerial grid, Likkert's four system of leadership, Fielder's contingency theory of leadership.